Hello viewers, welcome back to my channel. So in today's video we will read these things in detail. So let's start. First is cross demand. So cross demand refers to the relation between demand of a given good and price of related goods, and we know that related goods are of two types. First is substitute and the second one is complementary good, while keeping the other things constant. So we already read this thing, that how price of related good affects the individual demand and market demand in factors affecting individual and market demand. But at that time we didn't know that it is known as a cross demand. Fine. So as it is a demand and demand changes with change in time, so it indicates how much quantity of a given good will be demanded at different prices of related goods. So cross demand can be written as dx equal to f bracket में py, where dx is your demand of given good, demand of good x. F shows the functional relationship. Functional relationship means effect of independent variable is here price of related good on dependent variable, which is demand of given good. So py is price of related good. Now see positive cross demand. Positive means that if price of related good rises, then demand of given good should rise. So as we know that if price of substitute good changes, or let's say it rise, then demand of given good will also rise, which means that demand for the given commodity varies directly with the price of substitute good. Now negative cross demand. Negative means if price of related good rises, then demand of given good should fall. So if price of complementary good rises, then demand for given good will fall, which means that demand for the given good varies indirectly with the price of complementary goods. But before proceeding towards cross price effect on demand curve, let's see the graph for substitute and complementary goods. So substitute goods, as we know, substitute goods are those goods which can be used in place of each other. So I am taking the given good as shoes and substitute good as slipper. So price of slipper is shown on the y-axis and demand for shoes is shown on the x-axis. Earlier हम डिमांड Q कर रहे थे, Q, एंड एज सुन एज आर प्राइस राइजेस हमने अपनी क्वांटिटी को भी इंक्रीज कर दिया. देन डिमांड ऑफ शूज ऑल्सो राइसेस फ्रॉम OQ to OQ1. So shoes demand has increased due to increase in price of substitute goods. So complementary goods are those goods which are used together, and again the given good is shoes and now the complementary good is socks. So again price of socks is shown on the y-axis and demand of shoes is shown on the x-axis. So we are at point A, much particular price of socks we are purchasing this much quantity of shoes, and as soon as price rises from OP to OP1, because it is a complementary good, so what happens, our quantity demanded has decreased. So shoes demand decreased due to increase in price of complementary goods. So see, till now we have read about two curves, that is substitute and complementary goods. But they are not the demand curves. Why? Because demand curve shows the relationship between quantity demanded and its price, whereas we read here the price of complementary goods and demand of given goods. So it's not a demand curve. Now let's see cross price effect on demand curve. So cross price effect क्या है? Effect of change in price of related goods on demand for a given commodity. Related goods are of two types, as we already know that it's in substitute and complementary good. So प्राइस में किसके चेंज होगा? रिलेटेड गुड्स के, और डिमांड हम किसकी देखेंगे? गिवन कमोडिटी की. सो नाउ लेट्स सी द ग्राफ ऑफ इट. यहाँ पे ना डिमांड कर्व देखेंगे. सो डिमांड कर्व, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, शोज रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड इट्स प्राइस. तो हम यहाँ पे देखेंगे शूज का डिमांड कर्व. सो हियर द प्राइस ऑफ शूज इज कांस्टेंट
and the demand of shoes, it is the demand of shoes which will change. Fine. Because of change in the price of substitute good, which is slipper, we will see that how our demand is affecting. So at that particular price, we are consuming this much of quantity. And as soon as price of slipper rises, the demand for shoes also rises, whereas everything else is constant. So we are at OQ initially, but now we are at OQ1 and our demand curve shifts rightward from DD to DD1. So rightward shift क्या होता है? Increase in demand. So here it is an increase in demand of shoes. Now let's see. So again प्राइस तो कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज जो गिवन गुड है उसका प्राइस कांस्टेंट रहेगा. जो चेंज आएगा वो सिर्फ सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस में आएगा. नाउ हम अभी इस पॉइंट पर हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हैं, मतलब at that particular price of P we are consuming this much amount of quantity, and as soon as price of slipper falls we purchase less shoes, hence demand of shoes decreases from OQ to OQ2. So and demand curve shifts leftward from DD to D2, so which is decrease in demand of shoes. Now see the effect of complementary good. So demand of given good varies inversely with the price of complementary goods. So increase in price of complementary goods. So price तो given good का constant रहेगा. It's a straight line. हम यहाँ पर हैं, we are at this point and इस point पर हमारा ये demand curve बन रहा है. As soon as price of socks rises, socks के price जैसे ही rise हुए, demand of shoes falls. As a result, demand curve shifts from DD to D1 leftward. So as a result क्या हुआ? Demand curve shifts leftward. So demand fall हो गई 0Q से 0Q1 पर, और जो प्राइस है वो सेम ही है. प्राइस हमारा OP का OP ही है. Fine. Now forget about this particular curve D1. We will focus now on D2. So we are at this particular point, we are consuming this much amount of quantity at this much price, and as soon as price of socks falls, demand of shoes rises. So demand rises from 0Q to 0Q2. As a result, demand curve shifts rightward, means there is an increase in demand. Demand curve shifts rightward from DD to D2. सो अब आप देख रहे हो ना कैसे कि हमारा जो गिवन गुड है उसका प्राइस कांस्टेंट है, उसके प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा है. बट जो दूसरी कमोडिटी है विच इज़ अ सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड, जो रिलेटेड गुड्स हैं बेसिकली विच शेयर सम रिलेशनशिप, उनकी वजह से कैसे हमारे डिमांड अफेक्ट हो जा रही है. इवन हमारे गुड का जो प्राइस है वो सेम है. फाइन. सो वी आर डन विद द क्रॉस प्राइस इफेक्ट. लेट्स सी द graph for normal and inferior good when income changes. So normal good are those good whose demand rises with an increase in income and decrease with decrease in income. So we are taking the normal good as smartphone. And see, अगर कंज्यूमर की इनकम इतनी है तो हम इतना नॉर्मल गुड को कंज्यूम कर रहे हैं. कंज्यूमर की इनकम जैसे इंक्रीज हुई, हमने नॉर्मल गुड का कंजम्पशन ज़्यादा कर दिया. ठीक है, तो हम ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आ गए. फाइन. सो इनकम ऑफ कंज्यूमर हमने कहाँ पर शो करी है? वाई एक्सिस पे. और जो डिमांड है, जो नॉर्मल गुड है विच इज आवर स्मार्टफोन, इज शोन अलोंग द एक्स एक्सिस. सो इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स. वो हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था व्हेन वी रेड अबाउट द सब्स्टिट्यूशन इनकम एंड प्राइस इफेक्ट. तो इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है नॉर्मल गुड के केस में. एज अ रिजल्ट जैसे इनकम इंक्रीज हुई, हमारी डिमांड भी इंक्रीज हो गई फ्रॉम OQ to OQ1. नाउ सी द ग्राफ ऑफ इंफीरियर गुड. So inferior good refers to those good whose demand decreases with an increase in income. As we know that there exists an inverse relationship between income and demand for inferior good, so income effect is negative here. So inferior good is keypad and normal good is a smartphone. So when income rises from OY to OY1, from here to here,
then consumer demand for inferior good falls. And सी यही होता है ना कि जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो वो नॉर्मल गुड को ज्यादा परचेज करता है और इंफीरियर गुड का कंजम्पशन लेस कर देता है. तो यहाँ पे वही हो रहा है, जैसे ही कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हुई उसने इंफीरियर गुड का कंजम्पशन देखो यहाँ पे कम कर दिया. हम ए पॉइंट से अब बी पॉइंट पर आ गए. So they are not the demand curve, as the curve is telling us demand for given commodity and income of consumer. Now let's see their demand curve. Now let's see the effect of increase in income on demand for normal good. प्राइस तो कांस्टेंट रहेगा, नॉर्मल गुड का प्राइस यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा और सारी चीजें कांस्टेंट रहेंगी. क्या चेंज होगा? बस इनकम चेंज होगी कंज्यूमर की. सो इसीलिए therefore is the reason this is a straight line. DD is our initial demand curve, means at that particular price we are consuming this much amount of commodity, and as income of consumer rises, अगर consumer की income जैसे ही बढ़ी, the demand for normal good which is smartphone also rises from OQ to OQ1. As a result, your demand curve shifts rightward from D to D1. So rightward shift क्या होता है? Increase in demand. Fine. Now see the effect of decrease in income on demand for normal goods. So again we are here, we are at that particular point, and as soon as income of consumer falls, the demand for normal good also falls from OQ to OQ1 एट द सेम प्राइस ओपी. प्राइस में चेंज नहीं आ रहा है बट स्टिल इनकम के चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज आ रहा है. एज ए रिजल्ट हमारा डिमांड कब लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा फ्रॉम डी टू D1 विच मीन्स और विच शोज डिक्रीज इन डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड. नाउ सी द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन इनकम ऑन डिमांड फॉर एन इंफीरियर गुड. इंफीरियर गुड में नेगेटिव इनकम इफेक्ट आता है. सो अगेन यहाँ पे इंफीरियर गुड हमारा कीपैड है एंड उसका प्राइस आएगा यहाँ पर. प्राइस कांस्टेंट है कीपैड का. सो DD इज आवर इनिशियल डिमांड का फॉर द इंफीरियर गुड. एंड एज इनकम ऑफ कंज्यूमर राइजेस, अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो ही विल डिमांड लेस क्वांटिटी ऑफ इंफीरियर गुड. सो ही विल शिफ्ट टू सम नॉर्मल गुड. सो उसकी वजह से क्या हुआ? यहाँ पे क्वांटिटी फॉल हो गई, 0Q से 0Q1 हो गई और डिमांड का हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर गया फ्रॉम DD टू D1 एट द सेम प्राइस OP. प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा है बट स्टिल इनकम के चेंज होने की वजह से हमारी डिमांड चेंज हो जा रही है. सी द इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन इनकम. सो अगेन वी आर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, वी आर कंज्यूमिंग at this particular price this much amount of quantity, and as income of consumer decreases, the demand for inferior good rises from OQ to OQ1. As a result, our demand curve shifts rightward from DD to D1, which means increase in demand for keypad for inferior good. I hope you guys must like today's video, but don't forget to subscribe the channel, share it and like it also. Thank you.